Assalamualaikum all of you. उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे. So I'm going to discuss 2023 IBA round 1 test, the questions that we have found. The questions were of the test was not that difficult. काफी reasonable questions मौजूद थे इस test में compared to what we've seen before. और overall analysis ये है कि as long as you're able to focus on the easy and medium level questions और अपने time को आप properly manage करें और जो relatively level 1 और level 2 के questions हैं जिस तरह से मैंने आपको एक दफ़ा जिक्र किया अगर आप वो करें तो ये टेस्ट काफ़ी आसान सा था. पर ऑब्वियसली होता यही है कि लोग जो है वो मुश्किल क्वेश्चंस में टाइम ज़ाया कर देते हैं और उसके बाद में फिर जो है वो रिग्रेट करते हैं कि हमने आसान क्वेश्चंस को छोड़ दिया. So let's start off with this discussion. Hopefully this entire discussion should be wrapped up in about an hour to an hour and a half. Let's start off. Disclaimer, please note that the recreate version may not represent all the exact questions with the original answer options. Obviously बात है recreation है तो इसका एक level of dependability एक certain limit तक ही होता है और ये एक बेस्ट एस्टिमेट्स है ऑफ द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. काफ़ी क्वेश्चंस तो ऑनलाइन मौजूद थे, नज़र आ गए थे फ्रॉम सोर्सेज सच एज कैंगरो एंड अदर वेबसाइट्स. कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मेमोरी टाइप रिक्रिएशंस हैं बट ओवरऑल इट्स रीजनेबली गुड इनफ रिक्रिएशन. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट ऑफ. क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. वो कहता है द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 and 2 and the length of the third side is an odd integer. Which of the following can be the length of the third side? आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम याद होगा जिसमें आपको मालूम है अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स पता है कि अगर एक साइड 2 है और एक साइड 5 है तो जो थर्ड साइड है वो हमेशा इन दोनों के डिफरेंस और सम के दरमियान लाई करती है. तो 5 minus 2 difference is 3 and 5 plus 2 the sum is 7. So the third side must lie between 3 and 7. So it can be anything from greater than 3 and less than 7. Now, if you look at the answer options, you have 3, which is outside the range. You have 5, which is acceptable. You have 7, which is outside the range. You have 9, which is outside the range. So the answer should be option B, bravo. This was a relatively simple question. इस तरह questions obviously आपको attempt कर लेने चाहिए. Short duration questions हैं, आराम से इंसान कर सकता है. Right, so this was based on the triangle inequality theorem. Okay, you should all know this. अच्छा जी. Number 2, what is the simplified value of the cube root of 6.4 into 10 to the power of 10? Now 6.4 का cube root तो आप नहीं निकाल पाएंगे but अगर आप इसको देखेंगे 6.4 into 10 to the power of 10 है. इस 10 to the power of 10 को लिखा जा सकता है as 10 multiplied by 10 to the power of 9 और 6.4 को हमने as it is लिख दिया. उसका एडवांटेज ये होगा कि 6.4 into 10 जो है ये 64 हो जाएगा और इंटू 10 to the power of 9 हो जाएगा. सो द एडवांटेज इज कि इसका क्यूब रूट निकालना जो है वो कंपैरेटिवली आसान है. सो वी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64 into 10 to the power of 9 which would be equal to cube root of 64 multiplied by cube root of 10 to the power of 9. Now 64 का क्यूब रूट आपको मालूम है 4 होता है because 4 power 3 is 64 and 10 to the power of 9 का क्यूब रूट जो होगा वो 10 to the power of 3 होगा. Right, so the answer would be 4 times 10 to the power of 3, which is 4,000. So that should be the correct answer. That is option C, Charlie. Right. वैसे अगर आप 10 power 9 के क्यूब रूट के बारे में सोच रहे हैं, you can also write 10 power 9 का क्यूब रूट as 10 to the power of 9 to the power of 1 upon 3 because ये क्यूब रूट है. ये बन जाएगा 10 to the power of 9 times 1 upon 3, which is equal to 10 to the power of 3. So that's how the cube root can be easily determined of 10 to the power of 9. So the correct answer is 4,000, which is option C, Charlie. I hope this is clear. Acha ji. Third question. Jamil makes a drink by mixing 1 part of orange juice, orange squash with 9 parts of water. He uses 750 ml of orange squash. Jamil is going to put the drink he has mixed into 1 liter bottles. Find the greatest number of 1 liter bottles that Jamil can completely fill. ओके सो इसका जो रेशो यूज कर रहा है वो ऑरेंज स्क्वाश इज टू वाटर का जो रेशो यूज कर रहा है वो 1:9 है. ठीक है जी. वी ऑल्सो नो दैट ही हैज 750 ml ऑफ ऑरेंज स्क्वाश. अगर ये 750 ml है तो ये कितना होगा, ये 9 times 750 हो जाएगा. ओके दैट शुड बी इजी इनफ फॉर अस टू डिटरमिन. सो इफ यू मल्टीप्लाई 750 times 9 you're going to get 5 9s are 45. 63 plus 4 is 67, so 6750 ml.
सो दैट मीन्स दैट ऑरेंज स्क्वाश जो है वो 750 ml है और वाटर जो है वो 6750 ml है, कंबाइन होके हो जाएगा 7500 ml, जो कि बेसिकली अगर आप ml को कन्वर्ट करना चाहते हैं लीटर्स में तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के बराबर होता है। सो आप 7500 को जब डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स, यू गेट 7.5 लीटर्स। तो सवाल ये उठता है कि हम 7 मार्क करें कि हम 8 मार्क करें। तो दफ़ा एक बार गौर से पढ़ लीजिए, सवाल कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर of 1 liter bottles that he can fill. So completely fill, right? Completely fill करना है, उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 8 bottles पे जाएंगे तो वो completely fill नहीं होंगी, because 7 bottles completely fill होंगी और एक bottle जो है वो आधी fill होगी. So the correct answer would be option 7. So option A. So 7 liters is the correct answer. Okay, so we will choose option A as our answer. So इस तरह questions में don't just blindly round off. Just make sure that you understand exactly what the question is asking and answer accordingly. That is number 3. अच्छा जी, number 4 कहता है Sally plays 2 games against Martin. In each game, Sally could win, draw, or lose. In each game they play, the probability that Sally will win against Martin is 0.3. So probability of win is 0.3. And the probability that Sally will draw is 0.1. So probability of draw is 0.1. What is the probability that Sally will win exactly one of the 2 games against Martin? So 2 games खेले जा रहे हैं, so हमने एक गेम जीतना है और एक नहीं जीतना। तो फर्स्ट गेम और सेकंड गेम, तो हो सकता है फर्स्ट गेम जीत लें और सेकंड गेम ना जीतें। सो दैट वुड बी विन कॉम्प्लीमेंट। ओके, जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। सो ना जीतने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7 हो जाएगी। ओके, वी डोंट केयर कि वो ड्रॉ है कि वो लूज है, इट डजंट रियली मैटर। सो विन करने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और नेक्स्ट गेम ना विन करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.21। बट दैट्स नॉट द फाइनल आंसर, बिकॉज क्वेश्चन ने ये नहीं कहा था कि पहला गेम जीतना है और दूसरा हारना है। क्वेश्चन ने कहा था कि एक गेम जीतना है और एक गेम नहीं जीतना। सो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। सो इसकी जो अरेंजमेंट्स होंगी वो 2 फैक्टोरियल होंगी। सो दैट गिव्स यू 0.21 times 2, which is equal to 0.42. So the correct answer is 0.42, which is option C. I hope this is clear. Question number 5. वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। अच्छा, ये देखने में सवाल काफ़ी लंबी है, सो आइडियली इतने लंबे सवालों को पढ़ने में ही बंदा टाइम ज़ाया कर देता है। तो आई वुड नॉट एडवाइस कि आप इस तरह क्वेश्चन के ऊपर शुरू में अटेम्प्ट करें, आप इसको इग्नोर करें, सर्कल कर लें, बाद में वापस आके देखिएगा। मैं इस पर कर देता हूँ। वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस रिमूव्स कंटामिनेंट्स फ्रॉम वाटर इन अ कंटेनर एट द सेम टाइम दैट मोर कंटामिनेटेड वाटर इज एडेड फॉर प्योरिफिकेशन। सो कंटामिनेशन आप साफ कर रहे हैं मगर साथ में मजीद कंटामिनेटेड वाटर ऐड किया जा रहा है। Interesting. The percent of contaminated material in the container of water being purified can be modeled by the function Ct is equal to 0.9 to the power of t. So the percentage of contaminated water is Ct into 0 is equal to 0.9 to the power of t. और t क्या है जी? t is the time in seconds, यानी कितने देर से आपने contamination process साफ करने का process शुरू किया हुआ है in terms of seconds. The number of liters of water in the container can be modeled by the function Lt. So the number of liters is Lt. This is equal to 650 plus 300T. That tells you how much water you have in the container. Which of the following is a function that represents the number of liters of contaminated water in the container? Remember, this was the function for percentage, and this is the function for the total quantity of water. So if you want to figure out the number of liters, so the number of liters of contaminated water at any given point in time should be equal to the percentage multiplied by the total quantity, right? So percentage यहाँ से आ जाएगी 0.9 t से, ठीक है जी, ये आपका percentage हो जाएगा 0.9 t to the power of t, and total quantity जो है वो आपकी यहाँ से आ जाएगी 650 plus 300t. So we're going to use that 650
plus 300t. Multiplying this should give you the right answer. Now let's see if this is available. So 650 plus 300t, that's available in a couple of options, and option A should be the right answer because यहाँ पे 0.90 आ रहा है. So the answer should be option alpha. I hope this is clear. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, बट पढ़ने में टाइम और समझने में और उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लग सकता था, इसलिए यूजुअली जो 4-5 लाइनों के सवाल हैं उनको आप फिल वक्त सर्कल करके आगे बढ़ जाया करें. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6. If A over B is 2/5 and B over C is 3/4, then what is the ratio of A ratio B ratio C? Okay, so we have A is to B is to C, or A ratio B ratio C. A upon B is 2/5, so we can write this as 2/5, and B over C is 3/4, so we can write 3:4 here. Remember the zigzag method we've discussed in class, so go this way, cross and together and cross. So cross together, cross. So we have 3 2s are 6, 5 3s are 15, and 5 4s are 20. So the ratio of A, B, C would be 6 15 20. पूछा क्या हमसे? A, B, C पूछा है. So 6 15 20 should be the correct answer. That's option alpha. Okay, I hope this is clear to all of you. Number 7, there is a pool of length 50 meters and an unknown width. Acha janab. Ali and Imran decide to have a race. Very good. Ali runs along the perimeter of the pool while Imran swims the length of the pool. Ali runs 3 times as fast as Imran swims. Imran swims 6 lengths of the pool in the time that Ali runs around the pool 5 times. How wide is the pool? Now, the important bit is that Ali जो Ali distance travel कर रहा है, उतना उससे, क्योंकि इनफैक्ट इमरान की जो स्पीड है स्विमिंग की, उससे 3 गुना अली की स्पीड है रनिंग की. उसका मतलब ये हुआ कि जितना डिस्टेंस एक सर्टेन टाइम में इमरान ट्रैवल करता है, अली उसका 3 गुना ट्रैवल करेगा, बिकॉज उसकी स्पीड 3 गुना है. राइट. सो लेट्स फिगर आउट द डिस्टेंस दैट इमरान हैज swum. So the distance Imran swims in how much time? In 6 lengths. Okay, so that's going to be 6 times the length of the pool is 50 meters. So we multiply 6 times 50. That gives us 300 meters. Okay, that is the distance to Imran ne swim kar liya hoga, because usne 6 lengths swim ki hain. Each length is 50, so 6 into 50 gives you 300 meters. अब क्योंकि अली जो है उसके 3 गुना स्पीड पे रन कर रहा है, so therefore the distance that Ali has run in the same time should be 3 times of 300. So 300 times 3, that gives you 900 meters. तो 900 मीटर जो है वो अली इतनी देर में ट्रैवल कर चुका होगा. ठीक है. Or remember, Ali was running around the perimeter of the pool. It's a rectangular pool. Okay, so a rectangular pool, you know that in any rectangle, you have the length and the width. Okay जी. So let's say कि ये आपकी length है और ये आपकी width है. ये width हो गई और ये length हो गई. इसका perimeter क्या होगा? इसका perimeter होगा 2 times L plus W. That is the formula for perimeter of a rectangle. So therefore, अच्छा क्वेश्चन कहता है how wide is the pool? हमें width निकालनी है. राइट. अच्छा, याद रहे कि अली ने जो ये 900 मीटर ट्रैवल किए हैं, ये उसने he runs around the perimeter of the pool while Imran swims the length of the pool. Ali runs 3 times as fast as Imran swims. Imran swims 6 lengths of the pool in the time that Ali runs around the pool 5 times. So Ali ने 5 दफा perimeter का चक्कर काटा है. Okay, so therefore we can say that the distance Ali ने travel किया है, distance traveled by Ali should be equal to 5 multiplied by the perimeter. Okay, so Ali का distance हमने already निकाल चुके हैं, 900 मीटर था, तो 900 meters should be equal to 5 times the perimeter. Perimeter is 2 times L plus W. So when we divide both sides by 5, we get 2 times L plus W is equal to 900 upon 5 gives you 180. That means that L plus W should be equal to 90, right? And we know that the length is 50. The length of the pool is 50. We already know that. So we can say 50 plus W is equal to 90.
So we get W is equal to 90 minus 50, which is equal to 40. So the width of the pool has to be 40 meters. Okay, थोड़ा सा complicated सवाल था, थोड़ा सा time consuming भी था. Obviously, not the most difficult question in the world, but probably a level 2 question, less than level 3, but definitely higher than a level 1. ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके जहन में आई होंगी कि ये 900 कहाँ से आया. वेल, क्योंकि इमरान ने 300 मीटर ट्रैवल किया है 6 लेंस में. अली उससे 3 गुना स्पीड पे भागता है, तो अली ने 3 गुना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. सो इसलिए हमने इस 300 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया, और ये 900 मीटर्स ये डिस्टेंस आ गया जो अली भागा होगा अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पूल. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वर्किंग देख लीजिए, अगर पॉज करना चाहे तो पॉज कर लें. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. अगेन काफी लंबी स्टोरी नजर आ रही है इसमें. सिंथिया वांट्स टू बाय सम कैंडल्स एंड कैंडल होल्डर्स टू मेक डेकोरेशंस. At the local supply store, candles and candle holders are available in packs. There are 30 candles in one pack of candles. Okay, so एक पैक के अंदर, एक पैक के अंदर 30 कैंडल्स हैं. ये कैंडल्स का पैक है, बाय द वे. ओके, सो कैंडल्स के एक पैक के अंदर, कैंडल के एक पैक के अंदर 30 कैंडल्स हैं. और होल्डर्स के एक पैक के अंदर कितने हैं जनाब? होल्डर्स के एक पैक के अंदर बताया है इन्होंने कि 18 candle holders हैं. So while there are 18 candle holders in one pack of candle holders, that's 18 candle holders, right? सवाल कहता है कि given that Cynthia buys the same number of candles and candle holders, जितनी candles खरीदें उतने candle holders खरीदें, and that no candle or candle holder is wasted, which of the following could be the number of packs of candles that Cynthia buys? Okay. So what should happen is that if you compare the packs of candles with the packs of candle holders, the total quantity in each है वो बराबर होनी चाहिए. So if I look at the first option is 1. अगर मैंने 1 pack of candles खरीदा तो मेरे पास 30 आएंगे. तो अगर मैं 30 को डिवाइड करता हूँ 18 होल्डर्स पर पैक से, तो 30 डिवाइड बाई 18 होता नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड, सो दिस विल नॉट वर्क. I will have to buy a decimal number of packs. This is not possible. अगर मैं 2 पे जाऊँ, okay, if I go with option B, जो कि 2 है, so if I go with 2, if I say कि यार 2 पैक खरीद लेते हैं, तो 30 into 2 gives us 60 candles. तो 60 candles को मैच करना पड़ेगा 60 होल्डर्स से. अगर मैं 60 को डिवाइड बाई 18 करता हूँ तो ये भी डिवाइड नहीं होता. दिस बिकम्स 10/3, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ. So therefore this is also pretty useless. Again, number of पैक्स खरीदने पड़ेंगे तो वो डेसिमल में हो जाएंगे. अच्छा जी, अगर मैं ऑप्शन सी पे जाऊं 3 पे, अगर मैं 3 पैक्स खरीदता हूं तो 30 into 3 is equal to 90. आई एम गोइंग टू एंड अप विद 90 कैंडल्स. और 90 कैंडल होल्डर्स खरीदने के लिए कितने पैक खरीदने पड़ेंगे? सो 90 डिवाइड बाय 18 गिव्स मी 5. दैट मींस आई विल बी एबल टू buy 5 packs of holders so that I am able to buy an equal number of candles and candle holders. So this works out nicely. ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं, चेक करना चाहें चेक कर लें. 30 into 5 gives you 150. 150 divided by 18 नहीं होता, so this is also not acceptable. So the correct answer is option C, which is 3 packs of candles that she needs to buy. Okay, I hope this is clear. Right, let's go on to the next question. Question number 9. In a certain family, each child has at least one brother and at least one sister. What is the smallest number of children in this family? Right, so the smallest number of children in this family जो होगा, ये क्वेश्चन लोगों को यूजली कंफ्यूज करता है. लोग इस पे कहते हैं जी अगर हर बच्चे का एटलीस्ट कम से कम एक भाई और एक बहन है तो वो कहते हैं जी उसका आंसर 3 होना चाहिए, but 3 is not the right answer. इस तरह क्वेश्चन में याद रखें कि अगर आपके पास the question says that each child has at least X brothers and at least Y sisters, तो फिर जो total number of children, the minimum total number of children, we can't tell the exact number of children, we can say the minimum number. The minimum total number of children जो होता है वो उसमें आप कहते हैं कि बॉयज जो होंगे कम से कम वो x+1 होंगे, और जो गर्ल्स हैं वो भी आपके पास कम से कम x+1 y+1 होंगी. राइट, सो y+1 होंगी. सो इनको आप ऐड करेंगे तो बन जाएगा x+y+2. Remember this rule, you always add 2, not 1.
So in the same case, there is at least one brother and at least one sister. So इस केस में आपका सेम केस हो जाएगा, तो आप कहेंगे तो one brother plus the one sister plus 2, that gives you 4. So कम से कम 4 total बच्चे होने चाहिए. That's option B as the right answer. ओके, ये होता क्यों है? इस होने की बहुत सिंपल वजह है। हर बच्चे के कम से कम एक भाई और एक बहन है, ये कहा गया है। सो अगर आप अज्यूम करें कि एक लड़का है जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं, तो उसका अगर एक भाई है और एक बहन है तो 3 बच्चे तो ये हो गए। मगर वो जो लड़की है जो एक बहन की है, 2 भाई और एक बहन हो गए। सो वो जो लड़की है जो सिस्टर है, उसके 2 भाई तो हो गए बट उसकी कोई बहन नहीं भी, तो उसको भी एक बहन ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज द क्वेश्चन सेड दैट एवरी चाइल्ड, हर बच्चे का कम से कम एक भाई और एक बहन है। So every boy must have at least one brother and one sister. Every girl must also have at least one sister and one brother. So that is only possible if you have 4 people. If you have 3 kids, it's not going to work. So कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए. So the answer is option B. Bravo. I hope this was clear. Logic based questions ज़्यादा है, ये मैथ्स में काफी कम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नंबर 10 कहता है रिजॉर्ट एडवर्टाइजेस द स्लोगन 350 days of sun every year for the international tourist. According to the advertisement, what is the least number of days a tourist has to stay in the resort in 2023 to be certain of having 2 consecutive days of sun? कम से कम आपको कितने दिन गुजारने पड़ेंगे टू बी सर्टन कि आपके पास 2 दिन तो कंसेक्यूटिवली सन वाले आएंगे? सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अज्यूम के यार उसका कोई कंसेक्यूटिव डेज ऑफ सन आ ही नहीं रहे, तो कितना ज्यादा हम उसको बगैर कंसेक्यूटिव डेज ऑफ सन बिठा सकते हैं। तो अब देखें 350 दिन तो करने हैं सन वाले, सो 365 दिन होते हैं, 365 डेज ऑफ द ईयर। 2023 इज नॉट अ लीप ईयर, सो 366 डेज नहीं है, 365 डेज हैं। So 365 minus 350 gives you that means that you could have 15, maximum 15 sunless days, okay, or cloudy days, right? ओके, सो देयरफॉर अज्यूम कर लेते हैं कि जी वो जो बंदा है वो बहुत ही उसकी किस्मत खराब है, उसको सन मिल ही नहीं रही, या 2 कंसेक्यूटिव डेज मिल ही नहीं रहे। तो कितने दिन तक वो बैठा रहेगा कि वो उसको 2 कंसेक्यूटिव डेज सन के मिल जाएंगे? अगर 15 सनलेस डेज हैं, सो वी कैन अज्यूम दैट ईच डे, each alternate day there is sun and then no sun, sun and no sun, so something like that. So let's say sun, no sun, sun, no sun, sun, no sun. Okay, and this can go on for a maximum of 30 days. Okay, this was day number 1, day number 2, day number 3, day number 4, day number 5, day number 6, until you reach day number 30. Okay, and day number 29, sun and then no sun. अब यहाँ पे आके जब 30 डेज हो गए, तो अब जो नो सन वाले डेज हैं वो मैक्सिमम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, राइट? वो 15 ही थे, तो वो 15 के 15 एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। सो 31st डे पे अगर सन है तो 32nd डे पे भी सन आना ही पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस वुड बी ऑप्शन डी, डेल्टा। यू विल हैव टू स्टे देयर फॉर एटलीस्ट 32 डेज इन ऑर्डर टू बी सर्टन के कम से कम उसके पास 2 दिन कंसेक्यूटिव सन के आ ही जाएंगे, इस दौरानिए में तो आ ही जाएंगे, राइट? सो द आंसर इज 32. Okay, Ji. I know it's a tricky problem. It's a time-wasting problem. I would suggest कि के जो questions are more logic-based questions rather than math, so you can sort of, because इसमें बहुत variations आ सकती हैं सारे questions में. And this obviously took some thinking to resolve as well. So that's why, try to avoid these kinds of questions. Do more the regular math ones, the ones that you know quickly, level 1, level 2, and get them out of the way. Okay, so that's question number 10. Let's go to question number 11. Ali is asked to think of a positive number. He is then asked to square that number and then add 15 to it. Given that the final result is 31, what number did he think of? So you can do it by the answer options, or you can make an equation if you like. So let's assume that the number that he thinks of is x. So he's asked to square it. So x squared, then asked to add 15 to it. So plus 15, and this should be equal to 31. Pretty easy question. You know that you can solve it quite easily. So x squared must be 31 minus 15. That gives you 16. So if x squared is 16, then x could be the square root of 16, both positive and negative. That would mean x could be either plus 4 or negative 4. The thing is, the question was, told you clearly that he had chosen a positive number. So we can mark 4 as our answer. That's question number 11. Pretty easy. This is the kind of question that you need to be doing initially in your first 30 minutes. Number 12, there is a right angle triangle of sides 3 centimeter, 4 centimeter, and 5 centimeter. Okay, that's a pretty common right angle triangle, 3, 4, 5 triangle. So ये 3 है, ये 4 है, hypotenuse इसका 5 है.
and a square with side of 6. Okay, square है जिसकी sides 6 हैं. सवाल कहता है which of the following statements is true? A कहता है area of triangle is more than the area of square. B कहता है area of square is greater than the area of triangle. That's probably true. C कहता है the areas are the same. No, probably not. And D कहता है perimeter of the triangle is more than the perimeter of the square. Doesn't seem like it. Perimeter इसका जो आ रहा है वो 12 आ रहा है. इसका perimeter 12 है. इसका perimeter जो आएगा वो 6 times 4 24 आएगा. So the answer is probably going to be option B. चेक भी करना चाहे कर लें जी. एरिया का फॉर्मूला ट्राइंगल का जो होता है वो बेस टाइम्स हाइट डिवाइड बाय 2 होता है. इसकी बेस 4 है, हाइट 3 है. So you can say 4 times 3 divided by 2. That gives you 12 upon 2, which is equal to 6. इसका एरिया ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. ये स्क्वायर है. स्क्वायर की एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. मेरा नहीं ख्याल कि ये क्वेश्चन आया होगा IBA टेस्ट में, बट मान लेते हैं कि अगर आया तो. चलें जी. Number 13, the table below gives the number of bricks and the amount of mortar needed to build a brick wall. Okay. अच्छा जी, एरिया ऑफ ब्रिक वॉल इन मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर के लिए 60 ब्रिक्स चाहिए, 2 के लिए 120, 3 के लिए 180. लिनियर फंक्शन दिया हुआ है, सिंपल सा फंक्शन है जी. अमाउंट ऑफ मोटर 2.4, 4.8, 7.2, ये भी लिनियर फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है जी. टोनी इज गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिक वॉल. द एरिया ऑफ द वॉल वुड बी 8 मीटर स्क्वायर. सो अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 60 चाहिए था और 2 के लिए 120 चाहिए था, तो 8 मीटर स्क्वायर के लिए जो ब्रिक्स चाहिएंगी वो कितनी चाहिएंगी? सो द ब्रिक्स वुड बी 8 times 60, that's 480. Those are the number of bricks that you will need. And the question says Tony has 450 bricks and 20 bags of mortar. अच्छा, mortar की bags कितने चाहिए ये भी calculate कर लेते हैं. So mortar bags needed would be, we know that for 1 meter square you need 2.4 bags. So for 8 meters square you will need 8 times 2.4. ये भी linear function ही है. 2.4, 4.8, 7.2. तो ये हो जाएगा आपका 8 to the 16, 8 4 is 32, 16 and 3.2 is 19.2. So 19.2 की जगह आपको 20 बैग्स खरीदने पड़ेंगे आपको. राइट, 20 बैग्स मौजूद हैं हमारे पास. वी हैव 20 बैग्स, सो दैट्स गुड. बट वी हैव 450 ब्रिक्स. ब्रिक्स कम है. हाउ मेनी मोर ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड? तो आसान सा क्वेश्चन है जी. 480 चाहिए, 450 मौजूद हैं, माइनस कर दीजिए तो 30 ब्रिक्स आपको और चाहिएंगी. सो द आंसर शुड बी ऑप्शन सी. ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है. सो आई होप ये क्वेश्चन इस तरह के आपको आए. बड़े आसान से क्वेश्चन है जी. अच्छा जी, नंबर 14 कहता है फाइंड द सम ऑफ 25% ऑफ 2022 एंड 2022% of 25. By the way, याद रखें A% of B is always equal to B% of A. उसके यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि ये 2022% of 25 का आप लिख सकते हैं as 25% of 2022, and this is also 25% of 2022. So दोनों को ऐड करेंगे. 25% of 2022 plus 25% of 2022, this will become equal to 50% of 2022. 50% का मतलब होता है half, so half of 2022, which is equal to 1011. So the answer should be 1011, which is option A. Thank God it's available. अच्छा जी, question number 15. समझ में आ गया आप लोगों को? नंबर 14 कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आई होप नहीं होगी जी. नंबर 15, ओह गॉड कितना लंबा सवाल है जी. A country projects that the average amount of money in dollars that it will collect in taxes from each taxpayer over the next 50 years can be modeled by the function AT equals to 2850 plus 200T, where T is the number of years from now. अच्छा जी, तो ये आपका टैक्स हो जाएगा. So the tax amount is going to be AT, which is equal to 2850 plus 200T. मान लिया जी. और साथ में वो कहता है कि it also projects the number of taxpayers over the next 50 years can be modeled by the function CT, taxpayers, which is going to be 15 million into 1.01T. So 50, so we can say CT is going to be 15 million. 15 को मैं million को 10 power 6 लिख देता हूँ just to make my life easier, into 1.01T. सवाल कहता है which of the following is a function that represents the amount of money in dollars that the country expects to collect in taxes over the next 50 years? Well, I guess you can just multiply them, the number of taxpayers, with the amount that each person will pay. So this is the number of taxpayers at the bottom, and this is the amount that each person is expected to pay.
You just multiply them. So we're going to multiply the amount, which is 2850. Let me use some space. So 2850. Okay, so 2850 plus 200t multiplied by 15 into 10 power 6 into 1.01 to the power of t. Interesting. So you have a plus sign here. You should know that a plus b multiplied by c is equal to ac plus bc, right? You should know this. So when I do that, I'm going to multiply 2850 with all of this. So 2850 times 15 times 10 power 6 times 1.01t plus, I'm going to multiply 200t with all of this as well. So 200t times 15 times 10 power 6 times 1.01 to the power of t. ख्याल रहे कि जी कुछ चीज़ें पावर में हैं और कुछ चीज़ें पावर में नहीं है. मैंने यहाँ पे गलती की है जी. It should also be in power. Okay, good. So what do we get? 2850 times 15. Let's multiply 2850 times 15. So 2850 को into 15 करेंगे तो into 10 कर लें, which is 28500. और into 5 करेंगे तो ये इसका आधा हो जाएगा. So 28 का आधा 14 और 500 ज़्यादा 250 होता है. इसको you add them, we get 0, 5, 7, 12, 42, 750. So this is going to be 42, 750 into 10 power 6 into 1.01 t. So 42 750 वाला ऑप्शन एक तो ये है और एक ये है. और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक जीरो यहाँ पे और 6 जीरोस यहाँ पे, तो 7 जीरो हो गए. लेट्स काउंट जीरोस. 1 2 3 4 5 6 7. सो इसमें भी 7 जीरोस हैं, इसमें भी 7 जीरोस हैं. सो इट्स ईदर ए और सी. बी नहीं हो सकता, काट दीजिए. अच्छा जी, और जो सेकंड पार्ट है इसका, ये 200 times 15, that's 3000. 200 into 15 is 3000. So there should be 3000 into 10 power 6 into t into 1.01 to the power of t. So that's going to be 3 followed by 9 zeros and then the t as well. So I guess I have that here and I have the t as well. C में T missing here. There's no T here. So the answer cannot be C. So the answer should be option A. So 15 का answer हो गया जनाब Ali, A. I hope this is clear. Okay जी. So if you want to pause, you can pause. I'm going to now go on to the next question. Question number 16. Okay. ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये कहता है जी, an open topped box can be made from a sheet of aluminum measuring 50 centimeter by 30 centimeter by cutting congruent squares of side x centimeter from the four corners and folding up the sides. So basically हो ये रहा है. Let me just draw a rectangle for you. So let's assume that this is your aluminum sheet which has measurement of 50 by 30. So इसकी ये साइड 50 अज्यूम कर लेते हैं, ये साइड 30 अज्यूम कर लेते हैं. आपने इसके अंदर से करना ये है, इट सेज यू आर मेकिंग दिस बॉक्स फ्रॉम अ शीट. सो हाउ डू यू मेक इट? बाय कटिंग congruent squares of side x from the four corners. So basically आपने यहाँ पे एक स्क्वायर काटा है साइड x का, एक आपने यहाँ काटा है साइड x का, एक आपने यहाँ काटा है साइड x का, और एक आपने यहाँ काटा है साइड x का. Okay, so when you do that, you remove this and you remove this and you remove this and you remove this. What's going to happen is that आप इसकी साइड्स को यूं फोल्ड करेंगे, साइड से यूं और यूं, राइट. सो आपका ये जो है ये एक बॉक्स बन जाएगा. तो ये जो आपने साइड से काटा है x, राइट, जब उसको यूं ऊपर लेके आएंगे तो जो हाइट बनेगी बॉक्स की वो x बनेगी. ओके, सो आपकी जो बॉक्स की हाइट बनेगी वो x बन जाएगी. सो द हाइट इज गोइंग टू बी x. ओके, सो हाइट विल बी x सेंटीमीटर. अब लेंथ और विड्थ कितनी होंगी आपकी? सो जो आपकी ओरिजिनल लेंथ थी वो 50 थी. तो अब ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हिस्सा है ये बचेगा आपका 50 माइनस 2x, बिकॉज यहाँ से आपने x निकाल दिया होगा और यहाँ से आपने x निकाल दिया होगा.
So your length would be 50 minus 2x centimeter. और जो आपकी width है वो होगी, so पूरी height width थी 30, यहाँ से आपने x निकाल दिया, यहाँ से आपने x निकाल दिया, तो बीच में जो बचेगा वो बचेगा 30 minus 2x. So the width would be 30 minus 2x centimeter. और हमें निकालना क्या है, सवाल कहता है write a polynomial function to represent the volume. Volume of a rectangular box जो होता है, its volume is equal to length multiplied by width multiplied by height. So you can multiply these three dimensions, 50 minus 2x multiplied by 30 minus 2x multiplied by the height, which is x. So yeah, आपका आंसर होगा जी. I hope this is clear. So that is option Bravo. That's the right answer. I hope this is clear to everybody. Oh, I think I made a mistake. Sorry. It's not Bravo, it's delta. It's 2x. Right. Okay, so the answer is delta. Okay, I wrote 2x here and just chose the wrong option. Okay, the correct answer is delta. Right, that's number 16. Number 17. The ingredients required to make 20 cookies are butter, 200 grams, sugar, 100 grams, cocoa, 20 grams, and flour, 160 grams. If a chef has 300 grams of butter, 400 grams of sugar, 30 grams of cocoa, and 200 grams of flour, what is the maximum number of cookies that he can make? So the maximum number of cookies that you can make based on the amount of ingredients that you have for each of these four items. Let's check that. So butter के हिसाब से, okay, so butter जब आपके पास 200 ग्राम होता है, so from that 200 gram you can make 20 cookies. So then for 300 grams you should be able to make 30 cookies. It's a simple ratio. Yeah. So based on the butter, you can make, the butter is sufficient for 30 cookies. So butter is available for 30 cookies. Sugar का देख लेते हैं क्या रेशो था. So sugar के लिए मैंने बताया आपको कि for 20 cookies you need 100 grams. So 100 grams for 20 cookies. And how much sugar do we have? We have 400 grams. That's a lot of sugar. So 400 grams, that means 4 guna cookies ban jayenge. So 20 times 4 gives you 80 cookies. So we have enough sugar to make 80 cookies. But this is pretty useless because butter nahi hai kafi, so answer 80 to ho nahi sakta. So we can cut out option delta. You know, it's with 30 cookies ke hisab se 35 bhi nahi ban sakta. Isko bhi ignore kar dijiye. अगर आप कोको को देखें, so कोको जो है वो आपको चाहिए था 20 grams for 20 cookies, so 20 grams for 20 cookies. And how many grams do we have? We have 30 grams of cocoa, so 30 grams would be good for 30 cookies. Okay, so far so good. 30 cookies seems to be a good option because butter भी काफ़ी है और sugar भी काफ़ी है और cocoa भी काफ़ी है. अब रहा flour. So flour का क्या रेशो बताया इन्होंने? Flour का बताया कि we need 160 grams for 20 cookies, so 160 grams for 20 cookies. And how much flour do we have? We have 200 grams of flour. This is the amount of flour that we have, 200 grams. So 200 grams में कितनी cookies बन पाएंगी? So let's say x बन पाएंगी. We can cross multiply and solve for the value of x to figure out what the exact value is. So we get 160 times x should be equal to 200 times 20. So we get x is equal to 200 times 20 divided by 160. So this is easy enough. This cancels out 8 times and 200 upon 8 is 25. Okay, so इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ 25 cookies बना पाएंगे based on the amount of flour that we have. So that's sufficient for 25 cookies only. Okay, so what that means is that I cannot go beyond 25. So the answer should be A. बिकॉज हालांकि बटर हमारे पास काफ़ी है, शुगर भी काफ़ी है, कोको भी काफ़ी है, बट फ्लावर काफ़ी नहीं है. सो फ्लावर ना होने की वजह से हम जो कुकीज़ बना पाएंगे वो 25 बना पाएंगे. सवाल ये पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कुकीज़ दैट ही कैन मेक गिवन द इंग्रेडिएंट्स दैट ही हैज़ or all that he has nothing else, he cannot buy anything more. That's the assumption here. So the answer is 25. I hope this is clear to all of you. If you want to review this again, you can hit the pause button right now. I'm going to go on to number 18. Michael keeps dogs, cows, and cats and kangaroos. Kangaroos? Okay, kangaroos as pets. He tells Helen that he has 24 pets in total. Okay, interesting. 1/8 of them are dogs. Wow, that's 24 pets, by the way. And he's got kangaroos as well. Must have a little zoo.
Okay, in any case, so dogs are 1/8 of 24. So that gives you 3 dogs. 3/4 are not cows. Okay, that's interesting. So 3/4 are not cows. If 3/4 are not cows, what that means is that the remaining 1/4 must be cows, right? So cows, कितनी हो गई इनके पास? 1/4. 1/4 of 24. So 1/4 of 24 gives us 6 cows. 2/3 are not cats. Okay, so if 2/3 are not cats, what that means is that the number of cats would be 1/3. Therefore, 1/3 would be the cats. So cats, that's cats are 1/3 of 24, which gives you 8 cats. अच्छा जी, अब क्या बचा? और टोटल सवाल पूछा, हाउ मेनी कैंगरूज डज ही हैव? सो कैंगरूज निकालने हैं। अच्छा भाईजान, निकाल देते हैं जी। सो ये 3 और 6 और 8 ये मिलके कितने बन गए? दैट्स 17 pets which are either dogs or cows or cats. टोटल 24 थे, तो 24 में से आपने 17 माइनस कर दिया, तो what you left with is 7. This must be the number of kangaroos, so the answer must be option C. I hope this is clear to all of you. That was number 18. Okay, number 19. Salman's motorbike. I have a motorbike. Okay, it uses a mixture of petrol and oil. Fine, if you say so. In which oil and petrol are mixed in the ratio of 1:14. Okay, fine. So I'm going to mix oil and petrol in the ratio of 1:14. So 1 part oil for 14 parts of petrol. ठीक है जी। सवाल कहता है, Salman is planning to travel 6,000 miles. Are you nuts? 6,000 miles on a motorbike? Okay, fine. I've lost my mind. I'm going to go 6,000 miles on a motorbike. For every 20 miles that he rides, his bike uses 1 liter of the oil and petrol mixture. अच्छा जी, तो जो हमारा मिक्सचर है उसका 1 लीटर जो है वो 20 माइल के लिए काफ़ी है. सो 20 miles, so distance and mixture used. Okay, so mixture used. सो 20 माइल्स के लिए 1 लीटर इस्तेमाल किया जा रहा है. सो 6,000 माइल के लिए कितना यूज़ करेंगे? x कर लेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो वी गेट 20x इक्वल्स टू 6,000 times 1. So we get x is equal to 6,000 divided by 20, which is 300 liters of the mixture. Fine. 300 लीटर का हमने मिक्सचर इस्तेमाल कर लिया. अच्छा जी, मुबारक हो. सवाल कहता है कि a 500 ml bottle of oil cost 500 rupees. So what is the total cost of the bottles of oil Salman needs to buy? अब जो ये 300 लीटर का मिक्सचर यूज कर रहे हैं, इसमें ऑयल कितना होगा? सो ये जो टोटल 300 लीटर हम यूज कर रहे हैं, टोटल 300 लीटर्स हम यूज करेंगे, उसमें से ऑयल कितना होगा? तो वी नो दैट ऑयल टू पेट्रोल का रेशियो 1:14 है. दैट मीन्स कि जो ऑयल यूज्ड होगा वो होगा 1 आउट ऑफ 1 + 14 gives you 15. So 1/15 of the 300 liters has to be the oil. So that's going to be 15 times 2. So that's 20 liters of oil. और 500 ml की बॉटल जो है वो 500 रुपए की आती है. 500 ml बाय द वे आधा लीटर होता है. सो 1000 ml जो है वो पूरा लीटर होता है. सो 1 लीटर, अगर अगर 500 ml की बॉटल जो है वो आ रही है ₹500 में, तो जो 1000 ml होगा, यानी कि जो 1 लीटर की बॉटल होगी या 1 लीटर की जो खरीदना पड़ेगा वो पड़ेगा डबल द अमाउंट. दैट्स गोइंग टू बी ₹1000. सो अगर 20 लीटर खरीदने हैं तो 20 लीटर की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी जनाब आली 20 times 1000. दैट गिव्स यू ₹20,000. सो 20,000 रुपये का तो हम सिर्फ ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे. 6,000 माइल भी तो जा रहे हैं हम. खैर, जा रहे हैं तो जा रहे हैं भाई, रोड ट्रिप है, चले हमारे साथ. इज दिस क्लियर? सो द आंसर इज 20,000. और अगर पूछा जाए पेट्रोल कितने का यूज़ किया तो अच्छा खासा महंगा हो जाएगा जी, बिकॉज 14, अभी तो मैंने सिर्फ 1 पार्ट निकाला है, 14 पार्ट्स तो पेट्रोल का है. अगर पेट्रोल की प्राइस दी भी नहीं है, सो वी कांट फिगर इट आउट. और वैसे भी पेट्रोल प्राइस कुछ ही करना गया आपको, बहुत महंगा हो गया पेट्रोल वैसे भी. अच्छा जी, नंबर 20 पे चलते हैं. The distance from C to D is 45 miles. And the distance from D to E is 20 miles. तो C से D, D से E. So ये है C, ये है D और ये है E. So C से D का डिस्टेंस कितना है जनाब? ये है 45 miles. और D से E का डिस्टेंस कितना है जनाब? ये है 20 miles. टोटल डिस्टेंस 65 miles हो गया. अच्छा जनाब, Colin drives from C to D, then he drives from D to E.
Colin drives from C to D at an average speed of 30 miles per hour. So यहाँ जो speed है वो 30 mph है, और यहाँ जो speed है जनाब वो कितनी है, यहाँ speed जो है वो 40 mph है। ओके तो हम आपको सवाल पूछता है फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो बड़ा आसान है जनाब, 45 माइल्स यहाँ पे 20 माइल्स यहाँ पे ऐड करेंगे तो बन जाएगा टोटल 65 माइल्स। टाइम आपको निकालना पड़ेगा टाइम का, सो वी नो दैट स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो टाइम हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस विच इज 45 अपॉन स्पीड विच इज 30 एंड दैट गिव्स यू 1.5 आवर्स। ओके 1.5 आवर्स होंगे भाईजान। और यहाँ पे जो टाइम होगा वो होगा टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 20, स्पीड है 40, 20 अपॉन 40 गिव्स यू 1 upon 2 which is half an hour, 0.5 hours. So the total time that we get 1.5 plus 0.5, the total time would be 2 hours. Okay, दोनों को आपने ऐड करना है, 1.5 पहले पार्ट का और हाफ एन आवर दूसरे पार्ट का, रोल टाइम 2 आवर्स हो गया। इस टाइम को हम यहाँ लगा लेंगे स्पीड निकालने के लिए 2 आवर्स, तो यू गेट 65 डिवाइड बाय 2 जो कि होता है 32.5 mph माइल्स पर आवर। ऑप्शन ब्रावो। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया जनाब। ओके राइट, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। Two families are visiting a zoo. Okay, the first family buys 2 adult tickets and 3 child tickets and pays $66 for the tickets. Second family buys 3 adult and 5 child tickets and pays $105 for the tickets. Find the cost of a single child ticket. So ये तो सवाल simultaneous equations का है। पहली जो फैमिली है उसने 2 adult टिकट खरीदे, so 2A plus 3C, this amount is 66. Second family ने 3 adult plus 5 child and this amount is 105. Okay, so let's solve them simultaneously. We're looking for the cost of a child ticket. Okay, so we can use elimination. We want to eliminate the adult, so we can multiply the first equation by 3, the second equation by 2. That way we can eliminate the adult. So we get 6A plus 9C is equal to 66 times 3, which is 198. And the second one we multiply by 2, we get 6A plus 10C equals to 210. So we should be able to go minus, minus, minus. 6A minus 6A cancels. 10C minus 9C gives you a C. And 210 minus 198 gives you 12. So the child ticket is going to cost us $12. That should be option A as the right answer. I hope this is clear to all of you. Okay, so these are simple simultaneous equation problems. You should be able to get them right all the time. Pretty straightforward level 1 problems. There are 200 counters in a bag. The counters are blue, red, or yellow. 35% are blue, 1/4 of the counters are red. 1/4 of the remainder नहीं कह रहा, 1/4 कह रहा है. Okay, so let's go with that. So blue जो है 35% है जनाब. So blue is 35% of 200, which should be 70. So 70 blue हो गए, and red जो है जनाब वो है 1/4 of the 200. That's 50. So 50 ये हो गए. 70 plus 50 is 120. So 120 आपके blue और red हो गए. Okay, so ये 120 हो गए. So remaining कितने हुए? Yellow. Yellow is going to be the remaining. So yellow is going to be 200 minus 120, and that gives us 80. So 80 are the number of yellow counters. That should be option A. So 22 का आंसर जो है वो A होगा. I hope this is clear. Number 23. Three friends X, Y, and Z are talking about an art exhibition that they are about to visit. Following is the conversation between these three friends. Umar साहब कहते हैं जनाब there are at least 4 paintings from Da Vinci at the exhibition. सादिक कहते हैं no, they have at most 3. Oh, अच्छा. और ओवैस कहते हैं भाईजान there is at least 1. कम से कम एक तो है. If only one of them was right, then how many of Da Vinci's paintings are there at the exhibition? So you might be tempted to think अगर एक ही बंदा ठीक है तो फिर वैसे ही होगा, right? तो एक पेंटिंग तो होगी, बट ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है. चेक कर लेते हैं जी. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमने ट्रू साबित करने. ओके, नहीं, 3 स्टेटमेंट में से सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू साबित करना है. सो उमर ने कहा कि उमर साहब ने कहा कि डाविंची की जो है वो एटलीस्ट 4 पेंटिंग्स. सो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. सादित ने कहा नहीं भाईजान मैक्सिमम 3 है.
at most 3, so that means D is less than equal to 3. और ओवैस ने कहा भाईजान कम से कम एक तो है डिविंची साहब की, सो डिविंची इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एटलीस्ट. एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर देन, at most means less than equal to, at least is greater than equal to, at most is less than equal to, at least is greater than equal to. So we have that. So we have to just make sure that only one person is correct in this entire scenario. Only one person is correct, nobody else is correct. So let's say this is a number line. I'm sorry, I'm not drawing it straight. I need to draw it straight. Okay, I'm going to do that. Okay, so उमर ने कहा था d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है. सो ये 4 है, तो उमर ने कहा कि जनाब d इज एटलीस्ट 4 greater than equal to 4. सादिक ने कहा नहीं भाईजान, it's less than 3. So this was Umar साहब who had said this. Sadiq साहब said कि नहीं भाईजान, it's less than equal to 3. So this side, okay, less than equal to 3. Okay, so that's less than equal to 3. That's Sadiq साहब saying that. And Uwais साहब is saying d is greater than equal to 1. So इनका कहना ये था कि d की वैल्यू जो है वो कम से कम 1 तो है. Okay, so अब सवाल कहता है हाउ इफ ओनली वन ऑफ देम वाज राइट, हाउ मेनी ऑफ डिविंचीज पेंटिंग्स आर देयर द एग्जीबिशन. सो अगर मैं चूज करूं ए, फॉर एग्जांपल अगर मैं चूज करूं ए, मैं कहूँगी यार एक पेंटिंग है, तो अगर एक पेंटिंग है तो उसमें फिर दो लोग ठीक सही हो जाएंगे, ओएस भी सही हो जाएगा और सादिक भी सही हो जाएगा. बट हमें कहा गया था कि सिर्फ एक आदमी सच कह रहा है. सो ये आपका आंसर नहीं. ठीक है जी. अगर मैं कहता हूँ कि जी इसकी वैल्यू 2 है फॉर एग्जांपल, तो अगर 2 पेंटिंग मौजूद हैं तो उस केस में भी दो लोग सच्चे साबित हो जाएंगे, सादिक साहब और उवैस साहब. तो ऐसा नहीं होना था, तो ये भी काट दीजिए. अगर मैं कहता हूँ कि जी 3 पेंटिंग्स हैं वहाँ पे, तो उस केस में भी दो लोग सच्चे साबित हो जाएंगे, सादिक साहब और उवैस साहब. तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें सिर्फ एक को सच्चा साबित करना है. सो दी आंसर मस्ट बी 0. 0 पे क्या होगा, यू माइट से सर 0 पे तो पूरा एंटी क्लाइमेटिक हो गया, एक भी पेंटिंग नहीं है क्या. अगर एक भी अगर 0 पेंटिंग्स हैं डाविंची की, तो उस केस में सादिक साहब जो है वो करेक्ट प्रूव हो गए, उवैस साहब जो है वो इनकरेक्ट प्रूव हो गए. सो ओनली सादिक इज प्रूवन करेक्ट व्हेन इफ देयर इज ओनली 0 पेंटिंग्स या नो पेंटिंग एट ऑल. तो सादिक प्रूवन करेक्ट हो गया, बिकॉज सादिक ने कहा था कि मैक्सिमम 3 है, तो 3 से कम कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, राइट. सो सादिक साहब जो है वो प्रूव हो गए सही, उवैस साहब गलत प्रूव हो गए और उमर साहब भी गलत प्रूव हो गए. सो दिस इज द ओनली वैल्यू फॉर विच only one person is proven right and the other two are proven wrong. So the correct answer is A. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था ये, अच्छा लगा मुझे कुछ. ओके, अगर आपने फिर समझना है तो पॉज कर लीजिए, रिमाइंड करके देख लीजिए. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 24. इस दफा ये बड़े सवाल नजर आ रहे हैं जी. इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये शायद तीसरा क्वेश्चन है तो मैं नजर आ रहा है इस तरह की फंक्शन वाला. सो इन एनी केस सवाल कहता है जनाब कि ड्यूरिंग अ ड्रैग रेस कार्स विद डिफरेंट परफॉर्मेंस पोटेंशियल रेस अगेंस्ट ईच अदर व्हाइल यूजिंग अ हैंडीकैप सिस्टम. The distance d1 that the faster car travels is given by d1t equals to 10t squared. So d1t equals 10t squared, where t is the time in seconds after the driver starts. That's the distance traveled by the faster car. And the distance d2 is the distance the slower car travels and is given by d2t. d2t. So the slower car's distance, slower car का जो distance है जनाब आली d2t, that is equal to 5 multiplied by t plus 2 the whole squared, where t is the time in seconds after the driver of the first car starts. Okay, right. Which of the following is the function ht for the relative distance between the two cars? Relative distance, all the way the difference between the two cars distance. So you have to find the difference between the distance of the two cars. So but they haven't told us कि किसने ज़्यादा distance travel किया है. So I'll just assume that the faster car has traveled more distance. So we'll say d1 minus d2. So d1 is going to be 10t squared minus d2 is going to be 5 multiplied by t plus 2 the whole squared. This is squared, not the other one. Okay, right. So this becomes, so this is the distance d1, this is distance d2. Isko expand karna hai because all the answer options are in quadratic form. So we'll just expand this 10t square minus big bracket 5 times expand this bracket. This is going to be t squared plus 2. 2 to 2 is 4. So we get 4t plus 4.
And then we open this up, you get 10t square minus 5t square plus 20t plus 20. Open up the brackets, we get 10t square minus 5t square minus 20t minus 20. 10t square minus 5t square will give you 5t square. So this will become equal to 5t square minus 20t minus 20. So minus 20t minus 20. That should be the final answer. So that's going to be option Charlie, I guess, right? Okay, sounds about right. So the answer should be option C. That's question number 24. Okay, so 24 is done. Going on to number 25. Okay, the time required to cook a chicken is related to the weight of the chicken by the following formula. Cooking time is 20 minutes for each 0.5 kilograms plus 10 minutes. अच्छा आधे kg के लिए 20 मिनट यानी कि 1 kg के लिए 40 मिनट हो जाएंगे. Okay, so that means 40 minutes for 1 kg. For 1 kg, right? अगर आधे kg के लिए 20 मिनट है तो 1 kg के लिए 40 मिनट हो जाएंगे. Plus an extra 10 minutes, तो ये fixed time होगा. If a chicken has a weight of 2 kgs and Linda wants to finish cooking the chicken by 1:30 p.m., at what time should Sarah or Linda? Okay. Okay, right. So Linda, not Sarah, start cooking the chicken. So when should she start? Right. So what's going to happen is we're going to figure out how much time is needed. So for 1 kg, that's 40 minutes. So for 2 kg, that's going to be 80 minutes. 80 minutes ये हो गया plus the 10 minutes extra. So plus the 10 minutes extra. That's going to give you a total of 90 minutes, which is basically 1 hour and 30 minutes. So 1 hour and 30 minutes. That's how much time it's going to take. So she wants to be done by 1:30. So she wants to be done by 1:30. When should she start? She'll start obviously 1 hour and 30 minutes before 1:30. That's going to be 12 p.m. So the answer should be 12 p.m. Option A. ठीक है जी. अगर 1:30 तक complete करना तो 12 बजे शुरू करना पड़ेगा. So the answer is option A. That's question number 25. That was pretty straightforward, level 1 question. अच्छा जी. Number 26, there are 40 people at a meeting. Each person traveled to the meeting either by car or by train. 13 of the people are male, 10 females traveled by train, 8 males traveled by car. How many people traveled by car? ये ideal question है करने के लिए 2 by 2 grids. So I'm going to make the grid. I hope you all remembered how I make it. So we can divide the people in the form of their gender, male and female, and by the form of transport, which is going to be car and train. The total number of people at the meeting is 40. The question says each person traveled by either car or train. 13 of the people are males, so males got total 13. And that means females must be 40 minus 13, which is 27. I hope that's clear. So total males are 13, so total females are 27. And then it says 10 females traveled by train. So female train, that's 10, put 10 here. 8 males traveled by car, so male car, put 8 here. And you can figure out the remaining values. How? Well, if the total males are 13, so 13 minus 8 gives us 5. And if the total females are 27, 27 minus 10 gives us 17. So 17 females by car. So how many people traveled by car? That's going to be the sum of these two values, 8 plus 17. That gives us 25. And 15 people traveled by train. So you're asking how many traveled by car? The answer should be 25. I hope this is clear to all of you. This is my preferred way. You know that. Okay. Next question. Question number 27. As a marketing initiative, a baseball team plans to reduce ticket prices P in dollars according to the function PG equals 25 minus 0.1 G. So PG equals 25 minus 0.1 G. While G is the number of games that have been played so far this season, the team also plans to give away free baseball caps, and the number C in hundreds of caps given away per game can be modeled by the function CG equals to 2 minus 0.04 G. Since these marketing initiatives began, the number N in hundreds of fans in attendance has been modeled by the function NG. So the number of fans is given by this function, so that's NG. So NG is the number of fans, that's 10 plus 0.2 G. Which of the following function is for the revenue? Revenue
generated from ticket sales. So revenue is basically price into quantity. We should know that, right? So revenue is the price of the ticket multiplied by the quantity of tickets sold. So price is given by this formula, PG, right? Right, so reduce ticket. So this is going to be the price 25 minus 0.1 G. So that's going to be the price 25 minus 0.1 G. That seems to be the price, and the quantity is going to be the number of tickets sold. That's 10 plus 0.2 G. That's about it. What about the baseball caps? Who cares? So the free baseball caps. They haven't asked for, you're not really generating any revenue from there. Those are free. So in any case, so this is going to be the revenue generated, 25 minus 0.1 G times 10 plus 0.2 G. That looks like option A, doesn't it? Right? So that should be the right answer. Okay, so I hope this is clear to everybody. Right, so that's question number 27. Again, one more function type question. Number 28, how many smaller cartons of size 3 inches by 4 inches by 5 inches will be needed to completely fill one large carton of dimensions 4 feet, 6 feet, 10 feet? Okay, so to figure out how many small cartons you need, number of small cartons needed would be equal to the length into the width into the height of the large carton upon the length into the width into the height of the small carton. You might just say volume, which I don't say because I don't like to, because I want to make sure that things are divisible. Okay, in any case, so 4 feet, and this is inches, by the way. So the small carton's dimensions are given in terms of inches, and the large carton dimensions are given in terms of feet. So I'll have to sort of convert them to inches by multiplying by 12. So I should write this as 4 times 12, and then 6 times 12, and then 10 times 12, right? So we can write this as 4 times 12 times 6 times 12 times 10 times 12 divided by the dimensions of the small box, which are 3, 4, 5. So 3 times 4 times 5. Okay, let's try to cancel out whatever we can cancel out. So this cancels out here. This cancels out here. And we can cancel this here. So we'll be left with 12 to 12 to 12. So 12 times 2 times 12 times 2 times 12. 12 into 12 into 12 is 1728. So 1728 times 4. Let's see how much that becomes. Right. So 1728 times 4. Let's see how much that becomes. So 1728 times 4 is going to be 8 4s are 32. Only one option ending in a 2, so that should be the right answer. Option delta. Wasn't that tough, right? So it's going to be 6912. That's the right answer. Okay, so that's number 28. Let's go on to number 29. A train consists of 18 carriages. I like this question. There are 700 passengers traveling on the train. In any block of 5 adjacent carriages, there are 199 passengers in total. How many passengers are there in the middle 2 carriages? The problem with this question is that they basically said that there are 18 carriages. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. I'm going to be honest with you. I had to think about this question. It took me some time to figure it out. But so what I thought was, okay, if they want to make sure that in any block of 5 adjacent carriages, you have an exact same number, 199, I said, okay, I don't have to necessarily have a certain number in each carriage. I just need to know that if I have A here and B here and C here and D here and E here, then I need to have A again, because I want to make sure that if I look at this block, the same number has to exist. And I need to have a B here again, because if I look at this block, I need to have the same number of people. And I need to have a C here again, because if I look at this block, I need to have the same 199 again. So what I realized was that
the number of people, it has to be like A, B, C, D, E, again A, B, C, D, E, again A, B, C, D, E, again A, B, C. Okay, so that any block that you pick up of 5 carriages, they would add up to A plus B plus C plus D plus E, and would be a fixed number of 199. ये तो बात समझ में आ गई, बट सवाल ये उठा कि अच्छा अगर ये समझ में आ गया तो सवाल कहता है कि भाईजान टोटल 700 पैसेंजर्स हैं और उसके अलावा कोई भी कोई भी ब्लॉक ऑफ 5 एडजेसेंट कैरेजेस उठा लो तो उसका सम 199 आ रहा है। तो सवाल कहता है हाउ मेनी पैसेंजर्स आर देयर इन द मिडिल टू कैरेजेस। मिडिल टू कैरेजेस का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल कैरेजेस आपके पास 18 है तो 18 डिवाइड बाय 2 9 होता है, तो हमें 9th प्लस 10th की वैल्यू बतानी है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द 9th कैरेज एंड दिस इज द 10th कैरेज। हमें इसका जो है ना वो सम बताना है कि क्या है, डी प्लस ई बताना है। दैट्स द ट्रिकी पार्ट। तो हम क्या करें, वैसे हमें मालूम है कि आप देख सकते हैं ए जो है वो हमारे पास 4 दफा आया है, राइट। इनफैक्ट ए बी सी तीनों 4 दफा आए हैं, सो वी कैन से ए 4 टाइम्स प्लस बी 4 टाइम्स प्लस सी 4 टाइम्स प्लस डी जो है वो 3 दफा आया है। एक डी यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है, और ई भी 3 दफा आया है। सो 3D plus 3E, this is all adding up to 700 people, right? uh, I can actually sort of use, we know that A plus B plus C plus D plus E, which is the sum of people in any 5 adjacent carriages, is going to be 199, because the question told us that in any block of 5 adjacent carriages, there are 199 passengers, right? So what I could do is I could say, okay, fine. So maybe I could just simply say, okay, ये 199 है, ओके, ये 199 है, ये 199 है, तो बाकी बचते हैं ए बी सी। तो ये कितने होंगे ये फिगर आउट कर लेते हैं, राइट। मैंने ये पहला ब्लॉक 190, पहला ब्लॉक ऑफ 5 199, दूसरा ब्लॉक ऑफ 5 199, और तीसरा ब्लॉक ऑफ 5 इज ऑल्सो 199। सो वी कैन से 199 times 3, that's going to give us 597। और टोटल लोग थे 700, तो उन 700 में से अगर मैं 597 माइनस कर दूं तो 700 माइनस 597, तो जो बचते हैं जनाब वो बचते हैं 103 लोग। तो ये जो आखिरी 3 कैरेज होंगी इसमें सम होगा 103 का। यहाँ तो बात अगर क्लियर हो गई कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 103 है, सो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 103 है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो है 199 है। तो फिर डी प्लस ई निकालना आसान हो जाएगा, बिकॉज देन आई कैन सिंपली माइनस, सो आई गेट डी प्लस ई इज इक्वल टू 199 minus 103, that gives you 96. So the answer should be 96. That is option C. आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है बट पॉसिबल है किया जाए, राइट। पहले आपने आखिरी 3 की वैल्यू सम निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, और उसके लिए आपने कहा कि पहला ग्रुप ऑफ 5 का सम 199, दूसरा ग्रुप ऑफ 5 199, तीसरा ग्रुप ऑफ 5 199, ओके। तो आखिरी ग्रुप ऑफ 3 इज 103, and then we know that a plus b plus c plus d plus e is 199, उसमें a plus b plus c is 103, तो d plus e निकालना आसान हो गया, that's 96. I hope this is clear to all of you. That's question 29 right there. अच्छा जी, number 30. Michael sells cans of drink in his shop. The cans of drink are delivered in boxes to the shop. There are 24 cans of drink in a box. एक box में 24 है. On Tuesday morning, Michael had no cans of drink in his shop. ठीक है. Tuesday afternoon, 18 boxes were delivered. So 18 boxes delivered का मतलब ये है जनाब कि आपके पास 18 times 24 cans आ चुके हैं जी। कितने हो गए जनाब, ये हो गया आपके 240 and 160 and 32, 432 cans। ठीक है जी, ओके, या 240 and 160 and 32, yeah, okay। And then the question says when the shop closed on Tuesday, Michael had 15 cans left, तो 15 कैन बाकी थे, तो बाकी सब बिक गए होंगे, तो 432 में से आपने 15 माइनस कर दिया तो 417, these were sold, these were the remaining।
So these were sold. So 417 were sold. So the answer should be option C. I hope this is clear to all of you. Okay. Number 30 के बाद number 31. An exam has two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 has 60 marks, paper 2 has 90 marks. Passing is 2/3 of the total number of marks. Okay, so total marks कितने होंगे? Total marks जो होंगे वो होंगे जनाब 60 plus 90, that's 150. और जो पासिंग मार्क है वो 2/3 है, वो है 2/3 of 150, that's equal to 100. So Danielle gets 70% of the marks for paper 1. So Danielle को जो है 70% of Aya has 60. So that gives you 42 marks. So how many marks must he get in paper 2 to pass? So paper 1 में इसको ये आया. So paper 1 में जो उसके आए हैं वो आए हैं 42. So paper 2 में कितने आए होंगे? So paper 2 में आए होंगे जनाब because total passing आपको 100 चाहिए, तो 42 आ चुका है, तो कितना और चाहिए आपको? So 100 minus 42, that gives us 58. So you need to have 58 marks in the second paper. So the answer should be option B, which is 58. Is this clear? Right, 31 is done. So the correct answer should be option B. Number 32. Diana draws a rectangular grid of 12 squares on squared paper. Some of the squares are painted black. In each blank square, she writes the number of black squares that share a side with it. The figure shows an example. Now she does the same in a rectangular grid with 2018 squares. What is the maximum value that she can obtain as a result of the sum of all the numbers in the grid? That's an interesting problem. So you can see कि आपने क्या किया, इसने जितने squares black किए हैं, तो जो white वाले squares हैं उसमें वो लिख रही है कि उनके साथ कितने squares ऐसे हैं जो black हैं. So for example, इस वाले में इसने 1 इसलिए लिखा है because there's only one square next to it जो कि black है. इसमें इसने 2 इसलिए लिखा है because there are two, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. इसमें यहाँ इसने 1 लिखा है because there's only one here. इसमें यहाँ इसने 1 लिखा है because there's only one here. इसमें यहाँ इसने 2 लिखा है because there's 1 here and there's 2 here. इसमें यहाँ 3 लिखा है because there's 1 here, there's 2 here, and there's 3 here, right? So that's how the numbers are put. Okay, interesting. अब सवाल कहता है कि she is now making, she does the same in a rectangular grid with 2018 squares. Okay. अच्छा, अब 2018 को अगर आप फैक्टराइज करें ना, देखने के लिए कि ये बनता किस तरह से, because how many different rectangles can I make? If I divide 2018 by 2, I get 1009. And 1009 is actually a prime number, which means that you can't divide 1009 any further. So if you want to make a rectangle with 2018 squares, there's only one way of making it. Now, what is that way? Let me show that to you. So the only way to do this would be to make a rectangle which has a height of 2 squares only. Okay, because 2018 divided by 2 becomes 1009. That's a prime number. So you will have to have 1009 this way. Okay, and 2 this way. All right. So what that means is that obviously बात है 1009 तो बना ही सकते हैं, जगह नहीं है मेरे पास. So आपके पास इस तरह के स्क्वायर्स बन गए बहुत सारे. So आप क्या कर सकते हैं, आप लेट्स से कि इसको आप शेड कर दें, ब्लैक कर दें, इसको आप ब्लैक कर दें, इसको आप ब्लैक कर दें, right? So you do something to that effect, like a chessboard. Okay. So once you do that, what's going to happen is that, so this one has 2 squares next to it that are colored black. This one has 3, 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 this one has 3. The last one will have 2. Okay, whatever that last one is. Because it's 1009, the last one will actually be not this one, but another one here. So this is going to be 3 because this is an odd number. So you'll actually have one more here. And you'll have the shaded, and this one will be 2. Okay, because it's an odd number. So अब अगर आप काउंट करें नंबर्स को, तो आप देख सकते हैं कि हर रो में एक नंबर आ रहा है. You have one number in each row, right? And there's a total of 1009 rows. Okay, हर रो में एक नंबर आ रहा है, उसमें हर रो में 3 आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट रो जिसमें 2 आ रहा है और जो लास्ट रो जिसमें 2 आ रहा है. So 1009 रोज में हर रो में एक नंबर आ रहा है,
तो 1007 रोज के अंदर आपके पास 3 आएगा, सो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए। और 2 रोज ऐसे होंगे, पहला और आखिरी, जिसमें 2 आ रहा होगा। सो व्हाट डू वी गेट 3021 and we get 4 here, so that should become 3025. So the sum should be 3025. That's option D. That is the maximum value that you can have. It's a very tricky problem, and most people will probably waste time on this. So again, not advisable to do a question like this. छोड़ें जी, आगे बढ़ जाएं, बहुत सारे questions और बाकी हैं करने को, but अगर ये question आ जाए तो you know how to do it. But still, I would advise कि उसी वक्त करना जब बाकी सारे questions कर चुके हो. Do not waste time on a question like this. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33, ये कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है। इफ ईच एक्सटीरियर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 150 degrees, if each exterior angle of a regular polygon is 150 degrees, how many sides does it have? Remember that the sum of the exterior angles of any polygon, exterior angles of any polygon is fixed. It is 360 degrees. इंटीरियर का सम होता है n-2 into 180, बट ये एक्सटीरियर की बात कर रहा है। एक्सटीरियर का सम फिक्स्ड होता है, 360 डिग्री होता है। और अगर आपने उसको रेगुलर पॉलीगॉन कर दिया, दैट मीन्स के सारे एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। सो नंबर ऑफ साइड्स अगर आप n अज्यूम कर लें, सो द नंबर ऑफ साइड्स को आप n अज्यूम कर लें जो आपको नहीं पता, तो देन ईच एंगल इन दैट केस शुड बी 360 divided by n, and you make that equal to 15 degrees because that's what the question tells you. So 360 over n should be equal to 15, so therefore n will be equal to 360 divided by 15. So how much is that going to be? That's going to be about 24. So that's going to be 24 sides. So the answer should be 24. I hope you understand this. This is a pretty easy question. करने वाला सवाल है। जो पिछला सवाल था, ये वाला करने वाला नहीं था भाई। Okay, in any case. Number 34. Scott wants to make orange juice. Okay, he's going to buy boxes of oranges. There are 24 oranges in each box of oranges. So one box contains 24 oranges. Okay. Right, and 30 oranges make 2 liters. That means कि 1 लीटर के लिए 15 oranges होंगी. So 1 लीटर जो है वो 15 oranges से बनेगा। एक और सवाल ने कह दिया आपको कि 30 oranges से 2 liters बनते हैं, तो 1 लीटर के 15 हो गए। Scott needs to buy enough oranges to make 8 liters. तो 8 liters का मतलब क्या हुआ कि 8 liters के लिए आपको चाहिए जनाब 15 times 8, which is 120 oranges. So how many boxes do we need to buy, right? So that should be easy. So 120 oranges, एक box में 24 आते हैं. So you divide 120 by 24, which is what you have in one box, and that should be 5 boxes. So the answer should be 5 boxes. Option C, Charlie. Easy question, करने वाला सवाल है। अच्छा जी, और ये तो पढ़ने में इतना लंबा लग रहा है, बेहतर है कि छोड़ के आगे बढ़ जाए। Shelly sells books. On Saturday, she's going to give a free bookmark and a free dust cover with each book she sells. All the books are the same size. She needs to buy the bookmarks and the dust covers. Bookmarks come in boxes. Each box contains 24 bookmarks. So one box has 24 bookmarks. Okay, and dust covers come in packs, and each pack has 36. So one pack has 36 dust covers. Shelly wants to have enough bookmarks and dust covers for 250 books. She buys exactly the same number of bookmarks and dust covers. ठीक है, नंबर भी सेम खरीदना चाहती है वो, right? But 250 divided by 24 होता नहीं, which means she'll have to buy more than she needs. Okay. Find the number of boxes of bookmarks and the number of packs of dust covers that she buys. So let's look at the answer options. We'll do it by the answer options. So ये जो 8 boxes of bookmarks है, ये तो नहीं हो सकता because 8 is wrong, because एक box में 24 आते हैं, तो अगर आप 8 boxes लेंगे तो 8 into 24 जो है वो आपको देगा 192 bookmarks, जो कि आपके लिए काफ़ी नहीं होंगे। So B तो गलत हो गया। ए और सी और डी तीनों में 12 बॉक्सेस ऑफ बुक मार्क्स हैं, तो फिर हम बुक मार्क्स को इग्नोर कर देते हैं, हम डस्ट कवर्स देखते हैं। इसमें 8 पैक हैं, इसमें 12 पैक हैं और इसमें 10 पैक हैं। ओके, अच्छा, एक पैक में 36 आते हैं। सो 8 पैक काफ़ी होंगे। सो 8 times 36 कितना बनता है जनाब? ये बनता है 240 and 48 288 डस्ट कवर्स बन जाते हैं, जो कि हमें 250 चाहिए था, वो उससे ज़्यादा ही है। और 12 बॉक्सेस ऑफ बुक मार्क्स
और 12 इंटू हर बॉक्स में 24 आते हैं, 12 इंटू 24 ये कितना बनता है ये भी चेक कर लेते हैं। सेम आना चाहिए बिकॉज द क्वेश्चन सेड दैट शी बाइज द सेम नंबर ऑफ बुक मार्क्स एंड डस्ट कवर्स। So 12 into 24 is 240 and 48, that's 288 bookmarks. So 288 bookmarks भी हो गए और 288 dust covers भी हो गए, same number हो गया, so the answer should be option A then. So A must be the right answer. सी और डी में प्रॉब्लम ये है कि डस्ट कवर्स आप जो है वो ज़्यादा ले रहे होंगे बिकॉज अगर 8 पैक में काम हो रहा है 12 और 10 में आपके डस्ट कवर्स जो है वो 288 से ज़्यादा हो जाएंगे, आपने सेम नंबर खरीदना था। सो द आंसर शुड बी ऑप्शन ए। यू कैन डू इट इजीली बाय द आंसर ऑप्शन, सो व्हाई ट्राई एनीथिंग एल्स, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा जी, 10 more questions left. 36 कहता है the electricity bill of a certain establishment is partly fixed and partly varies as the number of units of electricity consumed. Fixed cost plus variable cost. Okay, so fixed cost को हम assume कर लेते हैं F और variable cost per unit को हम assume कर लेते हैं V per unit. ये per unit है by the way. So when in a certain month 540 units are consumed. So 540 units को consume किया तो उस वक्त खर्चा कितना आया? खर्चा आया हमारा fixed cost F plus variable cost into the units. So fixed cost F plus variable cost into 540 units. That should give you a total of 1800. एंड अगर आपने 620 यूनिट कंज्यूम किए, 620 यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए आपको जो खर्चा आया वो आया फिक्स कॉस्ट एफ प्लस वेरिएबल कॉस्ट इंटू 620। ये खर्चा बन गया आपका 2040। इनको आप अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। सवाल कहता है इन अनदर मंथ 500 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, देन द बिल फॉर दैट मंथ वुड बी हाउ मच? वेल 540 यूनिट्स की कॉस्ट 1800 है, सो 1800 से कम ही होगी। सो ऑब्वियसली या तो ए होगी या बी होगी, बट लेट्स जस्ट डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। सो अगर मैं ये इक्वेशंस को सॉल्व करूं, सो एफ प्लस 620 वी इज इक्वल टू 2040 एंड एफ प्लस 540 वी is equal to 1800 minus minus minus. This cancels out here. We get 620 minus 540, that is 80V equals to 240. So V is equal to 240 divided by 80, which is 3 per unit. The variable cost is 3 per unit. And then to figure out the fixed costs, so we know that F will be, I can use this equation, F will be equal to 1800 minus 540 V. V is 3. So we get 1800 minus 1620. That leaves you with 180 as your fixed cost. So now the cost of 500 units, that's going to be fixed costs plus variable cost into 500 unit. So fixed cost is 180 plus variable cost is 3 into 500. That should give you 1500 plus 180. This is equal to 1680. 1680. That's option Bravo. I hope this is clear to all of you. That's question 36. Question 37. Okay. Carlos puts tins into small boxes and into large boxes. He puts 6 tins into each small box. He puts 20 tins into each large box. Carlos puts a total of 3000 tins into the boxes so that the number of tins in small boxes is to the number of tins in large boxes is 2:3. What percent of the total boxes are large rounded to the nearest percentage? Okay, so 3000 boxes हैं, 3000 tins हैं. So 3000 tins, उसको उसने divide किया है in the ratio of 2:3. So small is to large में 2:3 में divide किया है. तो जो small box में गए हैं, so into the small box वो गए होंगे 2/5 times 3000, और जो large box में गए होंगे वो गए होंगे 3/5 into 3000. Okay, so that gives us 6000/5, which is 1200, and this is 1800.
तो इसके लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने यूज़ किए होंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज़ करने की तादाद निकालनी है आपको, तो आप करेंगे 1200 टिन्स डाले हैं आपने, और कितने बॉक्सेस में डाले हैं, 20 टिन्स इनटू ईच लार्ज बॉक्स, 26 टिन्स इनटू ईच स्मॉल बॉक्स, 20 so 1200 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा बिकॉज ईच स्मॉल बॉक्स में 6 टिन्स हैं, so that gives you 200 boxes, small boxes, and यहाँ पे number of boxes जो आएंगे वो आएंगे 1800 divided by each large box में he puts 20, so that's 90 large boxes. तो जो total boxes हो गए small और large मिला के वो हो गए 290. That's the total small and large boxes. अब सवाल पूछते हैं जो टोटल बॉक्सेस हैं उसमें से कितना परसेंट जो है वो लार्ज हैं. So large upon total multiplied by 100. So large is 90 divided by total is 290 and then multiplied by 100. That gives you 9 upon 29 times 100. अगर ये 9 upon 30 होता तो कितना होता है, हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं. अगर ये 9 upon 30 होता, 9 upon 30 into 100 होता तो ये 30% बनता. So the correct answer would be slightly more than 30%, so maybe approximately 31% के आसपास. So the correct answer should be option B. मैंने अप्रॉक्सीमेट किया, अगर आप चाहें तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट आई थिंक गिवन इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम यू हैव. दिस इज प्रॉब्ली अ लेवल 2 काइंड ऑफ अ क्वेश्चन बिकॉज इट रिक्वायर्स क्वाइट अ फ्यू कैलकुलेशंस, सो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है. यू हैव टू बी क्वाइट एफिशिएंट टू डू दिस फास्ट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जी स्मॉल बॉक्सेस में 1200 गए हैं और लार्ज 1200 टिन गए हैं. सो दीज आर 1200 टिन्स इन द स्मॉल बॉक्सेस एंड दीज आर 1800 टिन्स इन द लार्ज बॉक्सेस. ओके, और इन 1200 टिन्स के लिए आपको 200 स्मॉल बॉक्सेस चाहिए और ये 1800 टिन्स के लिए आपको 90 लार्ज बॉक्सेस चाहिए. टोटल बॉक्सेस 290 हो गए, उस 290 में से 90 जो है वो लार्ज है, तो कितना परसेंट लार्ज हो गए वो आपने कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया. आई होप दिस इज क्लियर. 38. There are 105 numbers written in a row: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Okay, so each number is being written as many times as that particular number. So 1 is written only once, 2 is written twice, 3 is written 3 times, 4 is written 4 times, and 5 is written 5 times, and so on and so forth. So what that means is, अगर आपने 105 numbers लिखे हैं, so the sum of these numbers should be 105, right? So you can say this occurred only once, this occurred 2 times, this occurred 3 times, this occurred 4 times, this occurred 5 times. So as you can see, the number of times each number is written is actually a number series. It's a sum of it's an arithmetic sequence of consecutive numbers starting from 1. और आपने 105 नंबर्स लिखे हैं, तो अगर आपने 105 नंबर लिखे तो आपको ये काउंट करना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके 105 पूरा हो जाता है. सो अगर आपको याद है, मैंने बताया था कि द सम ऑफ consecutive numbers from 1 to n can be written as n into n plus 1 divided by 2. This is the sum of consecutive numbers from 1 to n. Okay, so इसको आपने equal to 105 कर देना है. So this is equal to 105. Okay, to figure out how many numbers there are. Okay, so you cross multiply here, so you get n times n plus 1 is equal to 105 times 2 is 210. So अगर आप चाहें तो quadratic function बना के solve कर सकते हैं, but I'm going to try and do it without the quadratic. So n into n plus 1, you need two consecutive numbers that multiply to give you 210. तो वो कौन से दो consecutive numbers हैं जो multiply होकर 210 देते हैं? अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत factorization करके check कर सकते हैं. So 210 divided by 2 is 105, and then divide by 3 is a 35, and then you have a 5, and then you have a 7. So if you think about it, you can get 2 times 7, which is 14, and 3 times 5, which is 15. So 14 times 15 is equal to 210, which is what you wanted, two consecutive numbers multiplying to give you 210. You may also solve it quadratically, by the way, if you don't like this method. And you'll get n to be equal to 14. So that means there are 14 numbers. आपने 14 तक लिखना है, the last would be 14, written 14 times. Okay. अब सवाल ये था, how many of these numbers are divisible by 3?
So divisible by 3 कौन-कौन से होंगे? एक तो 3 वाले होंगे, एक 6 वाले होंगे, एक 9 वाले होंगे और एक 12 वाले होंगे जो डिवाइड बाय 3 हो जाएंगे. ओके, सो हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 3? सो 3 जो कि 3 दफा अकर करेगा, 6 जो कि 6 दफा अकर करेगा, 9 जो कि 9 टाइम्स अकर करेगा एंड 12 जो कि 12 टाइम्स अकर करेगा. So we have 3, we have 6, we have 9, we have 12. So the sum of these numbers, because it says how many of these numbers, 3 plus 6 plus 9 plus 12, that gives you 18 plus 12, which is 30. So you'll have 30 of these numbers that are divisible by 3. So the answer should be 30. Okay. Right, we have 38 done. So we have now 39. There is enough space for 80 boxes of cornflakes in a stockroom. On Monday, there are 65 boxes of cornflakes. On Tuesday, 17 are taken out. On Wednesday, 29 are put back or added. How many more boxes can now be put into the stockroom? This is a pretty easy question. So you had 65, you took away 17, then you added 29. So how many do you have now? So 65, 29 minus 17 is a 12. So basically you added 12, right? So 65 plus 12 is 77. So you have 77 at the end. So how many more can you stock? You have a capacity of 80. So 80 capacity थी उसमें 77 मौजूद है, so you can actually add 3 more. So 3 more are possible to be added. So the answer is 3. काफी आसान सा question है, nothing much to it. Kinds of questions that you should definitely be doing in your first half hour. Okay. Jenny has 12 marbles. 1/4 of these 12 are large. The rest of these 12 are small. Okay. So 12 का quarter कितना होता है? That's 3. So 3 large हो गए. So large are 3 and small are 9. Each large marble has a weight of 70 grams. So you multiply this by 70. Each small has a weight of 50. So multiply this by 50. So what do we get here? We get 210 here. What do we get here? We get 450 here. Add them up, you get 660 total weight. Okay, in terms of grams. And the question says, what is the total weight? So the answer is 60. Got it? Okay, that's number 40. 5 more questions to go. 41. 2 buildings are located on one street at a distance of 250 meters from each other. There are 100 students living in the first building. So this is building number 1. Building number 1, this has 150 people living in it, 150. And building number 2, this has how many people? This has, in fact, there are only 100 in the first building. Okay, I'm going to draw this again. There are 100 in the first building and there are 150 in the second building. Okay. And the question says, where should a bus stop be built so that the total distance that all the residents of both buildings have to walk from their buildings to this bus stop would be the least possible? Well, you'd have to equate it as much as possible, right? You have to equate it. If you make in front of the first building, if you make it here, then these guys would have to walk. So the distance was 250 meters. So if you go with option A, then these guys would have to walk 250 times 150. That would give you 25,000 and 12,500. That's 37,500. These guys wouldn't have to walk at all. But if you go with option B, which is 100 meters from the first building, so if you make it here 100 meters from the first building, then these guys would have to walk 100. Remember, the total distance was 250, right? Yeah. So these guys would have to walk 100 and these guys would have to walk 150, making a total distance walked of 100 times 100 plus 150 times 150. 15 into 15 is 225. So 22,500, 32,500. So that's less than option A. So B is better. If I look at option C, 100 meters from the second building, option C, if I make 100 meters here, okay, so let's say that I make 100 meters from the second building. So अगर मैं ये distance 100 कर दूं,
तो ये डिस्टेंस 150 हो जाएगा। तो फिर जो डिस्टेंस चलना पड़ेगा, इन लोगों को 150 मीटर चलना पड़ेगा, तो 100 इंटू 150 प्लस 100 इंटू 150, 150. That's going to give you 15,000 plus 15,000, and that's going to be equal to 30,000. That's better. और डिस्टेंस कम हो गया, सो बी काट दीजिए, सी पॉसिबल है। डी कहता है इन फ्रंट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, लेट्स ट्राई डी। इफ आई मेक द स्टॉप हियर, इधर इधर कर लें जी, यहाँ। ओके, स्टॉप अगर यहाँ आ जाए तो या दैट मीन्स कि ये जो लोग हैं इनको चलना पड़ेगा 250 मीटर ईच, तो ये हो जाएगा 100 people and each walking 250 meters. So plus these guys would not have to walk at all, 150. These guys would not have to walk at all, so these guys would need to walk, 100 people need to walk 250 meters each. That would be zeros, making a total of 25,000. That seems to be the lowest. Anywhere तो खैर नहीं होगा, नजर आ रहा है कि anywhere से काम नहीं बनेगा. So the answer should be option D. So 41, the answer is D. I hope this is clear to all of you. In front of the second building. थोड़ा सा time consuming question जरूर था, but wasn't that tough to do. But time consuming, so more like level 2 than level 1. Number 42, Adam, Linda, and Ryan share an amount of money. Linda gets 3 times as much as Ryan gets. So Linda is equal to 3 times Ryan's share. Linda gets half as money, half as much as Adam. So Linda also gets Adam ka half. That means that Ryan should be equal to Linda divided by 3, and Adam should be equal to Linda times 2. Okay. Right. अब सवाल कहता है what fraction of the amount does Linda get? So we know that the total amount that they're going to get is going to be equal to A plus L plus R. We know that A can be written as, well, we can actually assume a number to make our lives easy. So let's do that. Let's pick a number which is easily divisible by 3, and that can also be multiplied by 2. So let's just say that, let's just say that Linda gets $6. Okay, so if Linda gets 6, then Ryan should get L upon 3, which is 6 upon 3. That gives you $2. And Adam should get twice as much as Linda, so then he should get 6 times 2, which is equal to $12. So total कितना हो जाएगा Adam, Linda और Ryan का? ये Adam के हो गए 12, Linda के हो गए 6 और Ryan के हो गए 2. तो उस केस में जो टोटल बना वो 20 बन गया, और उस 20 में से जो Linda की अमाउंट है वो 6 है. So therefore Linda divided by total should be equal to 6 divided by 20, which is equal to 3 divided by 10. So the answer should be option C, 3 divided by 10. I hope this is clear to all of you. Right, that's question number 42. Acha ji. 43. Jack and Shella work for a company that sells breakfast cereal. Company wants to give customers a special offer. Jack suggests to put 25% more cereal into each box and not change the price. Shella says reduce the price and not change the amount of cereal in each box. In order for Shella's idea to give the same value for money as Jack's idea, by what percent does she need to reduce the price? अच्छा जी, तो Jack ने कहा यार पैसे आप वही रखें. So assume कर लेते हैं कि एक बॉक्स जो है वो $100 का आता है और उसमें 100 grams of cereal होता है. बड़ा महंगा है भाई, बट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. Okay, so this is the price and this is the amount of cereal. Okay, ये Jack की price नहीं, ये regular price है. This is let's say normal. So right now the regular सिचुएशन इज दिस. $100 का बॉक्स बेच रहे हैं और 100 ग्राम सीरियल जा रहा है. जैक भाईजान कह रहे हैं कि यार आप एक काम करें, आप प्राइस को कुछ ना करें, आप बस अमाउंट ऑफ सीरियल बढ़ा दें. तो प्राइस आपकी 100 ही रहेगी, अमाउंट ऑफ सीरियल जो है वो आपका 25% बढ़ जाएगा, 125 ग्राम्स हो जाएगा. और शैला कह रही है कि नहीं नहीं, आप एक काम करें, आप सीरियल उतना ही रखें 100 ग्राम्स, प्राइस आप कम कर लें. ओके, कितनी कर लें उसने ये नहीं बताया, वो आपको फिगर आउट करना है. But in order for Shella's idea to give the same value for money as Jack's idea, by what percent does she need to reduce the price? So basically, जो ratio
यहाँ पे है प्राइस इज टू क्वांटिटी का वही रेशो यहाँ पे भी होना चाहिए. सो प्राइस टू क्वांटिटी फॉर बोथ द पीपल शुड बी द सेम. सो ये 100:125 है और यहाँ पे x:100 होना चाहिए, सेम होना चाहिए. जो जैक का रेशो है वही शेला का रेशो भी आना चाहिए. सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व to figure out what the price should be in Shella's plan. So we get 125x equals to 100 into 100. So we get x is equal to 100 into 100 divided by 125. That is 25. 5s are 25. 4s are, you get 5 times 20. So you get 80. So therefore, in her plan, the price has to be $80. So if the original price was 100 and she needs to bring it down to 80, what percentage reduction is required? So the percentage reduction, I'm sure you can all tell very easily कि अगर 100 की प्राइस को 80 करना है तो percentage reduction required जो होगा वो कितना होगा? वो 20% होगा. Right? So the answer should be 20%. This was the advantage of taking the original price to be 100 to save yourself time. This is question number 43. Done. Answer should be option B. बचा जनाब 44 और 45 दो सवाल. 44 कहता है जी if f and g are functions such that fx is equal to 12 divided by root x. So f of x is equal to 12 divided by under root of x and gx is equal to 3 times 2x plus 1. Find fg1. तो पहले हम g1 निकालेंगे. So g1 is going to be 3 times 2 into 1 plus 1. That gives you 9. So then fg1 का मतलब होगा f9. f9 का मतलब होगा 12 divided by under root 9. Under root 9 is 3, so you get 12 divided by 3, which gives you 4. So the answer is 4. That's option C. Right, let's go to the last question, number 45. When liquid A and B are mixed to make liquid C, liquid A has a density of 70 kilograms per meter cube and has a mass of 1400 kilograms. B has a density of 280 kilograms per meters cube and has a volume of 30 meters cube. What is the density of liquid C? Note that density is equal to mass divided by volume. Okay, so we have A, we have B. Let's say, so mass divided by volume, right? So mass, volume, density. Okay. So A का क्या बताया हमें? A का बताया कि डेंसिटी है 70 और मास है 1400. तो वॉल्यूम मिसिंग है, वो फिगर आउट करना पड़ेगा. और B के बारे में क्या पता है कि B की डेंसिटी जो है वो 280 है और वॉल्यूम जो है वो 30. तो उसका क्या मिसिंग है? इसका मास मिसिंग है. ओके, सो वी हैव टू फिगर दिस आउट, वी हैव टू फिगर दिस आउट एंड इसको यूज करके हम सी का निकाल लेंगे. सो जो मास यहाँ पे आएगा दोनों को ऐड करेंगे, सी का मास आ जाएगा, सी का वॉल्यूम आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी. राइट. सो तो हम ए का वॉल्यूम कैसे निकालें? हमें मालूम है कि मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है. सो मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी. सो ए का मास 1400 है, वॉल्यूम मिसिंग है, दैट शुड बी इक्वल डेंसिटी ऑफ 70. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वॉल्यूम आ जाएगा 1400 डिवाइड बाय 70, which gives us how much? Which gives us 20. So ये वॉल्यूम जो मिसिंग था ये हमारा 20 आ गया. राइट. सो टोटल वॉल्यूम 20 ए, बी का 30, तो मिल मिला के 50 हो गया. ओके. अब बी का केस में हमारे पास मास मिसिंग है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है. सो वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी. सो मास हो जाएगा, मास मिसिंग है, सो मास हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. ये बी के केस में है. सो डेंसिटी इज 280, वॉल्यूम इज 30. सो 280 टाइम्स 30, सो कितना बनेगा जी? ये 6000 और 24, 8400 बन जाएगा. राइट. 8 या सो ये 8400 बन गया. ये इधर का मास आ गया जी. तो टोटल मास कितना हो गया जी? 8 और एक 9800. तो ये आपका मास हो गया जनाब और ये आपका वॉल्यूम हो गया. सो आपको डेंसिटी निकालनी है. सो सी का सवाल पूछता है कि डेंसिटी ऑफ सी क्या है ना. सो सी की डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी हो जाएगी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. मास है आपका 9800 डिवाइड बाय वॉल्यूम है 50. कैंसिल दिस आउट, यू गेट 980 अपॉन 5, which is like 196.
Option Bravo should be the right answer. Okay. That's it. So the entire test is done. इस पूरे टेस्ट में आप देखेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड से थे. लेवल 2 के भी कुछ सवाल हैं और लेवल 3 के हार्डली 2-3 सवाल ही हैं. वो स्पेशली जो रेक्टेंगल वाला सवाल था और वो जो ट्रेन वाला सवाल था वो थोड़े मुश्किल वाले थे, टाइम कंज्यूमिंग थे. मेजॉरिटी केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस हैं. लेवल 1 के तो इसमें बहुत सारे थे, कम से कम 20 से 25 सवाल ऐसे थे जो लेवल 1 क्वेश्चंस थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. उनको पहले कर लेना चाहिए. सो अगेन टाइमिंग इज द की. सोल्यूशन सारे आ चुके हैं, फिर कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा. एंड ऑल द बेस्ट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.